Hello and officially welcome to the Lion City, to the Instant Asia, to the City of Fine and so many, whatever you call it, but welcome to Singapore. जितनी मैं इस फुटेज में खुश दिख रही हूँ उतनी ही नर्वस थी बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर सो लॉन्ग, वो भी सोलो, और दैट टू इन अ डिफरेंट कंट्री, इन 3 different countries actually. Okay, this was the smoothest security check-in that I have ever done. Can't believe we've made it to Singapore. इमिग्रेशन के बाद मैंने लिया है सिम कार्ड, एयरपोर्ट से ही मैंने लिया है फॉर $32 एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट रेट दैट आई वाज गेटिंग. दो अगर आप सिटी से लेते हो तो शायद वो $15 का भी मिल जाता है, बट आई नीडेड इट एंड सो मैंने अभी ले लिया. उसके साथ साथ मैंने लिया है एक ईजी लिंक कार्ड जो MRT, जो यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, विच इज़ अमेजिंग, एंड बसेस के लिए एक्सेस देगा आपको. एंड $10 का मैंने लिया है जिसमें $5 की वैल्यू है. सो दिस कार्ड आई हैव टेकन एंड इसमें मैं टॉपअप करा सकती हूँ व्हेन एवर नीडेड. एंड ट्रस्ट मी, सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस MRT सिस्टम इज़ जस्ट अमेजिंग. एंड मोस्ट लाइकली मैं यहाँ से जाकर सिटी तक जाने के लिए भी MRT लेने वाली हूँ. एंड अभी मैं हूँ टर्मिनल 1 पे. शायद टर्मिनल 1 से मुझे टर्मिनल 3 जाना होगा फॉर MRT. ओके, इट्स डेड साइलेंट ओवर हियर. मैं टियोंग बारू पहुँच गई हूँ जो मेन सिटी में है. एंड थैंकफुली मेरे एक रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो मैं पहले 2 दिन उनके साथ रह रही हूँ जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द कंट्री. सो या, in spite of it being 7:30 in the morning, I am right here. Because कल की जर्नी इतनी टायरिंग थी with all those 2 flights, मैं काफ़ी लेट हो गई निकलने में. It's 1:30 already and मैं बस कैच करने वाली हूँ अभी, क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और जो ईजी लिंक कार्ड होता है वो मेट्रो और बस दोनों के लिए चलता है. तो मैं बस स्टॉप तक वॉक करके जा रही हूँ अपने रिलेटिव के घर से, एंड वहाँ पे आई विल कैच द बस नंबर 51. हाउ डू आई नो इट्स बस नंबर 51? आई विल शॉर्टली लेट यू नो. मैं जनरली किसी भी नई जगह पे आती हूँ तो आई लाइक टू टेक इट वेरी स्लो. तो आज हम बस वॉक करेंगे इन मोस्ट ऑफ द मेन एरियाज़. सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने यूज़ की वेबसाइट कॉल्ड गो देयर. वहाँ पे आप बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन डाल दो एंड इट विल टेल यू ऑल द 4 वेज ऑफ रीचिंग देयर. एंड अगर आप बस पे क्लिक करते हो तो वो एग्जैक्टली बता देगा कौन सी बस नंबर किस स्टेशन पे आ रही है, कितनी दूर है, कितनी देर में आ रही है. इट्स जेन्युइनली अ लाइफ सेवर. क्लीनलीनेस, ओह माय गॉड, नेवर सीन अ प्लेस एज क्लीन एंड एज ऑर्गेनाइज्ड एज दिस. ये वो पॉइंट है जब गूगल मैप्स मुझे थोड़ी सी गलत लोकेशन पे ले आया, लेकिन थैंकफुली विद द हेल्प ऑफ लोकल्स आई मेड इट टू द नेशनल गैलरी. अभी I witnessed this thing called painting dance, where a lady was dancing and also painting alongside. So that was interesting to watch. And honestly बताऊँ तो ये विज़िट मेरे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है बिकॉज करंटली देयर आर नो गाइडेड टूर्स. यू कैन ऑल्सो चेक ऑन देयर वेबसाइट कि आप जिस टाइम पे आ रहे हो उस टाइम पे एक गाइडेड टूर है या नहीं आपकी लैंग्वेज में. अभी इंग्लिश वाला ख़त्म हो गया है. और इस पॉइंट तक नेशनल गैलरी के रूफ टॉप पे पहुंचने के बाद वो ओवरवेल्म्ड इमोशंस काइंड ऑफ केम मेल्टिंग डाउन एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. येस, ऑन माई वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई सोलो ट्रिप. नॉट श्योर इफ इट वॉज द वेट ऑफ माई हैवी कैमरा बैग ऑन माई शोल्डर और जस्ट द फैक्ट कि बार बार ये सोचना पड़ रहा था कि कौन सा लेंस यूज़ किया जाए जस्ट टू बी एबल टू कैप्चर दैट प्लेस परफेक्टली. At that time, I really did have a strong love-hate relationship with travel vlogging.
Okay, right in front of me was Art and Science Museum, the giant wheel from where you can see all over Singapore, a football stadium, and almost all the main attractions and the main places of Singapore. And oh wow, this is the view that I had imagined when I was coming, right? And it just hit me. It just hit me that this is that first proper international trip जहाँ time zone बदल गया है, जहाँ हर चीज़ बदल गई है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. There are language barriers and there's what not, and ये सब चीज़ें मैं इतने हंस के इसलिए बोल रही हूँ because it just makes the experience so worthwhile, right? I think आज का experience बहुत overwhelming रहा है. मुझे लगता है overwhelming ही होगा in good and bad both ways because of obvious reasons. It's the first day in a new country. Lion, that's how it's Merlion. Thanks a lot. Bye. Okay, so the Merlion Park. Turns out I was pronouncing it incorrectly, and a guide over here corrected me very kindly. Also, told me the way towards it, and obviously it makes sense because that kind of the structure, it's of a lion from the top and a fish at the bottom, and there's a lot of historical significance attached to that, so that does make a lot of sense. Honestly, जितना मैं पता कर पाई हूँ उसकी significance relates way back जब सिंगापुर originally एक fishing village था, इसीलिए it's the body of a fish and the head of a lion, so they wanted to keep that intact, so hence the fish. And again there's this tale that a prince went hunting and he apparently found a tiger and named it Singapura. तो सिंगापुरा का संस्कृत में मतलब lion city होता है, इसीलिए lion city है, and hence the head of a lion. I think I should use Google Maps now. So I want to go to Merlion first. So I'll just which one name? Sorry if I'm disturbing you. Okay. And after a good walk of 10 minutes, finally made it to the area that I had imagined the most before coming to Singapore, the Merlion Park and the Bayfront area. Finally made it here, and there are just so many people here. Merlion Park में मैं थोड़ी देर बैठी, pictures click की. I think I got a really cool shot, and the best part is that it was self shot. And अब मैं walk कर रही हूँ मरीना बे सैंड्स होटल की तरफ, और मॉल भी है वहाँ पे, and I will try to go on top of it on the rooftop जहाँ से पूरे सिंगापुर का bird eye view मिलता है, and it's amazing. It's supposed to be amazing. And best time जहाँ तक मैंने सुना है वो होता है जब आप दिन का व्यू और रात का व्यू दोनों ले पाओ. So that's what I aim to do. And I'm feeling glad कि मैं अपने रिलेटिव के घर से लंच करके आई थी, अदरवाइज आई वुड हैव बीन फैमिश्ड टिल नाउ. एंड आज मैं खाना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बट मे बी टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट हैविंग रियली गुड फूड एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट एज वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि सिंगापुर में इतने सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, बट वॉट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर, जैसे यहाँ का कोई नेशनल सॉन्ग या यहाँ पर कोई नेशनल जो डांस होता है, ये सब मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना है यहाँ का, सिंपली बिकॉज यहाँ पे इतने सारे इमिग्रेंट्स हैं एशिया के, तभी उसको इंस्टेंट एशिया बोलते हैं, बिकॉज एशिया के बहुत सारे कल्चर्स आपको एक जगह पे मिलते हैं यहाँ पे, हेंस द नेम. तो फूड मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि चाहे कुछ और होना हो, फूड, सिंगापुर हैज़ फूड. ऑल्दो ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन के लिए वो ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, लेकिन फिर भी वी विल सी व्हाट वी कैन एक्सप्लोर in that dimension, probably starting tomorrow. And as for me, I can see that Marina Bay Sands hotel right from here. It looks so beautiful. यहाँ
पहुँच तो गई बट आई जस्ट इन्जॉयड द वॉक सो मच, टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो एंड अब मुझे मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी ऊपर जाऊँ ना, ऑल्सो बिकॉज अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाएगा. सो जब भी मैं ऊपर होटल में जाऊँगी तो दैट वुड बी व्हेन आई हैव गुड 2 hours इन डे लाइट. जैसे मुंबई में हमारे पास है मरीन ड्राइव, यहाँ है मरीना बे सैंड्स. मरीना बे, दैट वाज अ बैड वन. मस्त जोक मारा रे. या हंस रे हलकट हंस. तो दिन की शुरुआत कितनी ही ओवरवेलमिंग रही हो, बट द एंड वाज सो ब्यूटिफुल विद दैट लाइट शो which must not be missed if you're in Singapore. It happens in the Bayfront area at 8 o'clock and 9 o'clock every night. एंड इसके बाद माई रिलेटिव्स टुक मी टू दिस प्लेस कॉल्ड क्लार्क की, जो कि सिंगापुर में नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है एंड आई कुड टोटली सी वाई. वहाँ पे हमने खाया इंडियन फूड एंड मुझे डे के एंड होते होते ये तो समझ आ गया कि आगे आने वाले कुछ दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. बट लिटिल डिड आई नो कि ऐसे खाने के लिए भी मैं तरस जाने वाली हूँ. मोर इन द अपकमिंग डेली व्लॉग्स. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन एंड आई विल सी यू फ्रॉम सिंगापुर इन द नेक्स्ट वन टुमारो. बाय. I think I got off the wrong station or something. It's still so confusing. सिंगापुर में किसी भी वक्त बारिश हो सकती है. I can't believe some people. You know, Solo like travelers. both exactly.